वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है a and b are two positive integers and n which is equal to a plus ib whole cube minus 107i is a positive integer। ऐसा है तो n का वैल्यू क्या है? a plus ib whole cube minus 107i should be a positive integer। इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जो है that has to be equal to 0। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई द कंडीशन। सो मैं क्या करता हूं, पहला n को एक्सपैंड करता हूं। आई विल एक्सपैंड माई n। सो a प्लस आई बी होल क्यूब माइनस 107i विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a प्लस आई बी होल क्यूब को एक्सपैंड करता हूं। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू आई बी प्लस 3a इंटू आई बी होल स्क्वायर plus ib whole cube minus 107i that is equal to, so let us separate the real parts and imaginary parts। so a cube real है, इसके बाद यहाँ i square minus 1 हो जाएगा, so minus 3ab square minus 3ab square, this is the real part, plus i के साथ आपको 3a square भी है, and here you have minus b cube minus 107। so this is the real part, this is the imaginary part, given that n is a positive integer, therefore this has to be equal to 0। so 3a square b minus b cube minus 107 is equal to 0। so this implies 3a square b minus b cube is equal to 107। that implies b common लिया तो 3a square minus b square is equal to 107। now a and b are integers, so b 3a square minus b square both are integers, so दो integers का जो product that has to be equal to 107। the product of two integers has to be equal to 107। so 107 को कितना अलग अलग तरीके से I can write it as a product of two numbers। so 107, are there any factors for this 107? so if you see 9 7, so you can see that there are no factors for this number 107, this is a prime number, so 107 can only be written as 1 into 107। ठीक है, so 107 can be written as the product of two integers only in one way, either 1 into 107 or 107 into 1, there is no other way। so this implies अगर कंपेयर किया तो b has to be equal to 1, अगर ये वाला 1 हो सकते हैं, और b is equal to 107। अगर b 1 है तो 3a square minus b square जो है that has to be equal to 107। this implies 3a square is equal to 108। this implies a square is equal to 36। this implies a is equal to plus or minus 6, but question में दिया है a is a positive integer, so minus 6 तो नहीं होगा, so a has to be equal to 6। so अगर b 1 है तो a 6 होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर b 107 है तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है दैट हैज टू बी इक्वल टू 1। 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 107 का होल स्क्वायर प्लस 1, 107 होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11449 प्लस 1 that is equal to 11450। this implies a square is equal to 11450 divided by 3। so आप देख सकते हैं 11450 is not a multiple of 3, यहाँ fraction आएगा, hence a is not an integer, so this solution is not valid। so आपको you have only one valid solution where a is equal to 6 and b is equal to 1। ठीक है, so a has to be equal to 6
and B has to be equal to 1. So if I substitute these values, so what is the value of my complex number n? ये वाला imaginary part 0 हो रहा है. So the value will be this: a cube minus 3ab square, or a into a square minus 3b square. A common लिया तो a square minus 3b square, that is equal to 6 into 36 minus 3. 36 minus 3 is 33. That is equal to 180 plus 18, 198. So my n has to be equal to 198. So option A is the right answer. Thank you.